Welcome to Youth Ki Baat, a flagship podcast series by the Youth of India Foundation. Today we have with us Ajinkya Dhariya Ji, the founder of PadCare Labs. He's someone who took on a topic most people are even skeptical about talking about, pads. And he built a solution that is changing our lives across the country. Through innovation and determination, Ajinkya Ji is making periods safer, cleaner, and more sustainable than ever. So let's get to hear his story and the story behind PadCare. Namaste Ajinkya Ji, welcome to Youth Ki Baat. We are privileged to have you here with us today. Yeah, I mean, I'm quite excited, right? Because we are in the new office. This is the first podcast that what you're doing, and yeah, looking forward to our discussion. Also, to start with, congratulations on the 7 years of completion of Thank PadCare. It is, I mean, it has definitely been one hell of a journey. And I would love to know about how would you explain PadCare to someone who is imagining, who is hearing it for the first time and imagining something else out of it. Sure. So, in a single line, if someone is just reading a pedicure, right? So, uh, what we do in nutshell is a recycling of sanitary pads, but that is a very tech driven. But when we talk about here, this name called PadCare, which is very direct of sanitary napkin and the care of our people as well as the planet. So, as a concept of PadCare, when we started, it is all about creating a multifold impact on our people and the planet in different way while choosing a first topic around menstrual hygiene management, where we are taking care of women starting maybe the from college going to the probably before menopause, right, across the spectrum from school colleges, while providing a menstrual hygiene as a service where we do or provide sanitary napkins. We have our own core mechanism that no one is doing across the globe is the recycling of the pads and probably converting that extracted products to maybe plant pots as well as this copy of paper like this. That is amazing, Zinkaji. I would love to know about your childhood, your college life, and how did the idea of pad care came into your mind? One thing is that the other thing is these innovative things that you keep on launching, which is pad care X Ugao, something that has very recently been launched, Rebirth. How does these idea come up to your mind? What is that main vision that always occupies? If I go back to my childhood, right? So I belong to small coastal village where probably uh, maybe 150 kilometers away from here in between Mumbai and Goa. A decent, maybe I spent my childhood probably less in school, more in the on ground, just doing something, playing. And I've been lucky to born in a family जहाँ पे मेरे पापा मम्मी ने एक कल्चर सेट किया जहाँ पे मेरे क्यूरियोसिटी को हमेशा एक प्रोत्साहन दिया. So in college, school days as well, it is something I'm the guy where I was doing less study, but I was always in that topper list. I don't know why, how, but it's something happened. But then मुझे भी पता चला कि it is just not about choosing a path or standard path. It is all about how you are connecting actions to your curiosity. It's just not about being curious is okay, but how you are bringing that curiosity to execution to do something that helped me. Uh, I did my first sales, to be very frank, on sixth standard. There was one competition, right? And I always wanted to become to start something. I still remember while maybe on during summer holidays, my discussion with my mom and like mom specifically, we were discussing something, or someone asked me, or teacher asked me in that day in school, Ajinkya, what you want to do in the future, like what you want to do? A general question. So I mentioned couple of people are mentioning about being a pilot. कुछ लोगों ने बोला कि उनको जॉब करनी है, आईटी सर्विसेज में जाना है. एंड तभी मुझे मैं जो बोला और बहुत दिल से आया था कि आई जस्ट मेंशन आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, वड़ा पाव की गाड़ी हो या कुछ, बट खुद का कुछ करना है. And with that trigger, when I mentioned to my mom as well, so she is not laughed, to be very frank. She supported that particular thought process. Fast forward to that, I was a guy who has that kind of clear visibility, right? So हमेशा मेरा एक visibility clear था, clear aim था. When I was 10th standard, I was very clear कि मुझे 10th के बाद गांव छोड़ के कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है. So I went in the Ruparel Mumbai for 2 years. In that 2 years as well, the entire environment was new because I'm coming from small village जहाँ पे English भी कभी सिखाई नहीं थी. It is everything happened in very native language in Marathi. But वो
the adoption and understanding the environment and change, right? I didn't ever had that afraid of change. मतलब मैं कभी change को डरा नहीं. ठीक है, सीख लेंगे. 11-12 होने के बाद भी I did my mechanical engineering. Again, the same copy paste. We are less in the college rooms, more into the practical, doing something. I build vehicles. I build on work on couple of projects, file the research paper, and always, if I look back my educational background, I always been lucky to have certain kind of teacher come mentors, right? They guided me. And ये जो शुरुआत होती है ना, मुझे लगता है कौन से भी इंसान की जो थॉट प्रोसेस सेट होती है बिफोर मे बी 6 बिफोर 20th ऑफ एज, बिकॉज वो एक्सपीरियंसेस, वो कल्चर, वो सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस देता है, एक ट्रस्ट देता है. देन टिपिकली मैंने भी सेकेंड ईयर में एज यूजुअल जैसे करते हैं कि एमबीए की किताबें खरीदी. वो मतलब अभी भी है मेरे पास, मैं कभी ओपन नहीं किया, मुझे पता नहीं मैंने क्यों खरीदी, बिकॉज मेरे इसमें भी वो प्लान था कि अजिंक्य तू करेगा, चल कॉलेज कर ले, मैकेनिकल कर ले. और मेरा इंटरनल कॉलिंग था कि 1 साल की इधर तो जॉब कर और उसके बाद तू खुद का कुछ शुरू कर. बट जरा पेरेंट्स पीयर प्रेशर भी रहता है, यार सब एमटेक कर रहे, सब एमबीए कर रहे, इंजीनियरिंग के बाद मेरा क्या. सो पीयर प्रेशर में तो खरीद तो लिए, but I never that intent to study MBA because मेरा path clear था. But it's just not about what I always wanted to do, but I started taking the steps. उसमें था this understanding the common problems, right, in the community. मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, probably I will start. I started that thought process to observe carefully, and across the challenges, maybe in water, waste, agriculture domain, probably. I was started observing my own grandparents that time, what challenges they are facing. It's just more of an observer. And then started taking one problem, that is something I feel, started building the concept around that. Or luckily in 2016, 2017, government has launched couple of hackathons. अभी भी कुछ hackathons continue है. वो हैकाथॉन्स में गवर्नमेंट स्टार्टेड पुटिंग देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अगेन दैट्स समथिंग रियली मुझे वो मस्त लगा. मतलब कोई प्रॉब्लम दे रहा, अपने को रिजॉल्व करना है, सॉल्यूशन सबमिट करना है. आई रियली लव दैट एंटायर फेज ऑफ माय लाइफ. बट देन अगेन दैट इंजीनियरिंग कीड़ा, एक के ऊपर सेटल नहीं होना है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अराउंड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल, दैट वाज मेंशन in the one of the problem statement of the government's hackathon program. But then I not stopped there. I came what I did that after my graduation, एक साल there was a company called NanoX. So NanoX is joint venture between ISRO and the Grindmaster. मेरे पास couple of options भी थे कि कौन से कंपनी को ज्वाइन करना है, but I choose to be a work with a company where I'm getting a direct chance to work under CEO, right? So that I will learn how the CEOs are thinking. When I will start in the future, I have a notes with me how probably on ground team create a certain perspective about CEO, and other hand what are the CEO's challenges, such that I can balance. I started taking a note on that time when I was probably 21, 22. I was doing a decent job, but morning 9 to evening 9 I was working for them, and रात के 10 से 2 I started working for me, just to explore, do something. वो एक नशा था, मतलब अभी भी है, बट वो एक शुरुआत थी यार, वो मजा आ रहा था. I was not living that particular same path. I was trying to do different in a silent. With that, I started exploring problem statement. Government of India has given certain kind of problem statement. And with that pursuit, I landed in Pune to check कि सच्ची ये problem है क्या. When I मतलब सराउंडिंग्स में मैंने बात की, सफाई कर्मचारियों के साथ जब बात की, तब बोले कि यस, ड्राई वेस्ट का सोल्यूशन है, वेट वेस्ट का सोल्यूशन है, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट ब्लडी sanitary pads and diapers because the taboo, because just that sense of shit, this is a shit who's gonna touch, hazardous kind of thing. But if no one is looking at certain things, that is opportunity, right? If no one is talking about certain things, that is opportunity. That no one is looking at that's something how I started and entered this domain. But parallelly also I was started working on agricultural products and all, again that initial phase. And the concept of PadCare, when we launched in 2018, uske 6 महीने पहले I applied for certain government grants. So government has literally given an initial 15 lakhs rupees. और मेरे घर पे बताने की हिम्मत नहीं हुई थी. मैं जॉब कर रहा था,
मेरे कोई तो मुझे 15 लाख रुपए भी दे रहा था, बट मैं घर वालों को बोला ही नहीं. सो इन मे लिटरली कुछ काम के मैं घर पे गया, मॉम डैड भाई थे खाना खाने, बोला कि मुझे जॉब छोड़नी है, एंड स्टार्टेड क्राइंग कि यार जॉब छोड़नी है, बट वो बोले कि करना क्या है. मैं बोला कि मुझे इसे सैनिटरी नैपकिन पता है, उनको लगा मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, बट देन आई टॉक अबाउट इट इज डिस्पोजल, दैट वो प्रॉब्लम ही है, वो भी किसी को पता नहीं है. एंड अगेन इट्स touchwood where been lucky to get support from my parents, brother. तो उन्होंने एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट था उससे सपोर्टेड फील हुआ. दे वेर हैप्पी कि अजिंक्य तू जिस चीज के लिए कुछ करना है वो करने का तुझे चांस मिल रहा है, गवर्नमेंट इज फाइनेंसिंग, चल एक्सप्लोर कर 3 महीने के लिए. तो लिटरली पैडकेयर स्टार्टेड जस्ट फॉर 3 months एज अ प्रोजेक्ट, एंड देन इट्स बीन 7 years. We are a team of around 120 people, 24 cities, creating a massive impact across the funnel. We have this world's first sanitary napkin disposal recycling technology. And who has thought, like no one has thought कि एक copier paper भी pads extracted material से scientifically extracted material बन सकता है. So yeah, so if I summarize my childhood, is something quite of crazy. Good people who have helped me, mentor me, and I took a risk, right? So and certain things also I kept away, like Instagram मुझे पता नहीं मैं क्यों ये किया, 2nd ईयर में मैंने अनइंस्टॉल किस चीज की वजह से किया था. देन अभी भी आदत है, मैं काम करता हूँ इंस्टाग्राम तो मैं काम करता हूँ डिलीट मार देता हूँ, बिकॉज वो मेरा वो एडिक्शन, मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इफ एनीथिंग, इफ आई एम हियर, इफ आई एम नॉट लर्निंग न्यू, आई शुडंट बी हियर, राइट? So that process, that thought process helped me to build a PadCare as a brand. That is amazing. Kudos to you. You're coming from literally the team member of just you to the team member of 120 people, from a project of 3 months to the project of 7 years, which is going on and it will go on for years right now. अजिंक्य जी, अभी आपने एक बात बोली कि आपने अपनी मम्मी को कहा था कि कुछ अपना चालू करना है, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव अबाउट दैट. How do you think the support of the family or the support of people around you matters when you are wanting to start something of your own? I think this is to be very frank, in initial days, this is all about that maybe the feeling of there is someone who is trusting your thought process. There is someone, if things fall out, you can just call, right? It is very important. And I don't have a doubt on your current youth. Talent की कमी नहीं है, hard work amazing, but that supportive culture is very important, that peer is very important. And if it is coming from the parents, we are humans, we are not animals, right? Yes, in that particular way, but yeah, we have emotions. If your mom says yes, your dad say no, you will have that kind of feeling, yeah, dad ने ना बोला था. You will have that in the back end. But imagine your family is behind you, तू जा, जो भी करेंगे हम तेरे पीछे है. Your friends are there, तू जा, हम है, right? So वो feeling सबसे बड़ी important है, and that act as a catalyst. मेरी एक thought process से तुझे वो aloneness कभी आपको feel नहीं होगा, right? And entrepreneurship is a alone journey. It's tough. Like if someone is just starting, just put as a tag on the LinkedIn, I'm founder and CEO, don't start it. It is literally, like everyone is talk about good, you will see the good stories, but it takes decades to build a business, brands, and the sacrifices भी बहुत होते हैं. Where I still remember when I started PadCare in 2017-18, my friend circle was just going here and there, गोवा जा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, ट्रिप्स निकाल रहे थे, they were enjoying chilling. और रात में आके मैं एक 10-15 फेलियर्स के बाद बैठता था और शिट यार, इसने मतलब ये अभी घूम रहे और इधर मैं फेलियर्स झेल रहा हूँ, अकाउंट में पैसा नहीं है, राइट? बट ये सब चीजें भी, बट एंड दैट टाइम लोग दोस्त भी बोलते थे, क्या जिनके किधर है, तू बदल गया है, कॉलेज में अलग था, ये ऐसा हो गया. बट मैं उनके, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा खुद के ऊपर बिलीव था कि नहीं, अभी ये टाइम है, इनिशियल 2 या 3-4 साल, उसके बाद दोस्त तो दोस्त है, सच्चे दोस्त तो रहने ही वाले, वो किधर जाने वाले हैं. सो एंड द गोल्डन एरा ऑफ एनीवन इफ दे वांट टू डू समथिंग इज बिटवीन 20 to 25 और 26, राइट? आपके पास गिरे तो उठने की क्षमता रहती है,
आपके पास बेसिक नॉलेज आया हुआ रहता है सब चीज़ों के बारे में, एक बेसिक मैच्योरिटी रहती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई रहती है। योर पेरेंट्स आल्सो नॉट दैट मच ओल्ड वेयर उनके कुछ हेल्थ और ये आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एक बार आप 26-27 क्रॉस करते हो तो यू गेट ऑटोमेटिकली दैट मैच्योरिटी एंड वो जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, राइट? तो अगेन योर रिस्क एबिलिटी विल लिटिल बिट विल गेट ड्रॉप। सो दैट्स वेयर आई फील 15 से 20 आप एक सब एक्सप्लोर करो, जर्नलिस्ट रहो। 20 से 25 जस्ट फोकस ऑन एक्सपर्टीज व्हाट वेर यू, मतलब वो पीरियड, वो 5 साल आपके खुद के ड्रीम्स के लिए जियो, राइट? एंड दैट इज समथिंग व्हाट वर्क रियली वेल फॉर मी। एंड इसमें एक रहता है, राइट, व्हेन आई स्टार्टेड लाइक अगेन दोस पीरियड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली, यार मेरी आइडिया मुझे किसी को पता नहीं, कोई चुरा लेगा, राइट? मैंने भी वही किया, मैं भी उसी इसमें। बट देन मुझे रियलाइज हुआ मतलब ये जो चीज है जस्ट ऐसे हर एक के दिमाग में रहता है, हर एक, बट शेयरिंग जब होता है, डिस्कशंस जब होते हैं, दैट दैट समथिंग विल गिव अ गुड अमाउंट्स ऑफ विजडम, reality check, right? So don't worry about who will sleep. It is not about the ideas, it is all about execution. Very, that is a very powerful line right there. Yeah. Also, you mentioned about exposure अभी कि आप भी एक छोटे गांव से आए हो and the transition to a complete new city. I'm also from a very very small town. सिलीगुड़ी के पास में 4 घंटे दूर, वहाँ पे शायद बहुत कम चीज़ों का एक्सेस है। तो मैं भी जब एक एक स्टेप करके दूसरे दूसरे सिटी जा रही थी तो मैं हर एक नया चीज़ सीख रही थी। What do you think is the one thing that the people, that the students who are coming from small towns should keep in mind so that they do not feel that nervousness, you know, कि अच्छा ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, there's a lot of peer pressure coming in, there's a lot of pressure otherwise. I think the someone is coming from small town, वो उधर ही एक स्टेप पीछे जाता है जब वो assume करता है आई एम कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, राइट? दैट इज द फर्स्ट, इट इज साइकोलॉजी, Right. right? And I observe and I compare, right? The people are coming from different diverse background, respect, but if someone comes, उसमें ना वो हंगर रहती है, उसकी भूख, मैंने किधर, जिसके पास सब है उसमें जरा भूख कम रहती है, बट जिसके पास कुछ नहीं है ना, द हंगर इज क्रेजी टू लर्न न्यू थिंग्स। उसको गिरने का डर नहीं रहता है, बिकॉज ऑलरेडी वो इतना मतलब ये रहता है, तो उसको पता नहीं है ये तो मैंने जिया जिया है, राइट? उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते उस तरह के, राइट? and but even that, if, and that is powerful stage, but if you start with that, अरे मैं छोटे गांव से हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो आप उधर ही एक स्टेप पीछे चले जाते हो। और ठीक है, आप एक बार दो बार, बट यू हैव टू कंटिन्यू ट्राइंग। देयर वर टाइम इनिशियली फर्स्ट ईयर में सब, मैं नेटवर्किंग इवेंट पे जाता था, सब बातें करते थे, मतलब नेटवर्किंग लंच टाइम पे मैं उधर पे कोने में बैठ के उनको देखते रहता था, राइट? मुझे पता नहीं इनको कैसे टैप करना है। वो और वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मेरे मेरे लैंग्वेज में, मेरे नेटिव लैंग्वेज में मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, देन सबसे बड़ा रोग इंडिया का, लोग क्या कहेंगे, राइट? जज। सो बट अगेन देन धीरे 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 आपको छोड़ना नहीं है, आपको जाना है, यू हैव टू कंटिन्यूअस रिट्राई करना है, एंड थिंग्स चेंज, इट टेक टाइम। So if someone is coming from small medium village, like be with you, respect your roots, but don't bring that roots as a bottleneck to your growth journey, right? And it's all about psychology, like how you think, what is your thought process. Right. Ajinkya ji, with a network of almost 200,000 dreamers and doers, as you rightly said, youth today are people who are who are so hard working कि आपको बस एक डायरेक्शन देनी है उनको और वो उस जगह चल पड़ेंगे, आपको कुछ समझाना भी नहीं है। But there's this crave of validation always कि अच्छा, if someone says I'm proud of you today and we'll be happy, we'll be like yes, I have done something today. There's this lack of self satisfaction. We always tend to have this hunger to do more. Do you think the hunger to do more is necessary, or do you think it has both the parts, highs and lows of it? I think there will be a different perspective, and is all about again from your roots, from where you are coming from, what are your responsibilities. Sometimes responsibilities take over to everything, right? But I feel hunger is good. I enjoy stress as well, by the way. Stress is again always when मैं stress में नहीं रहता हूँ ना, मेरा फटता है यार,
कभी सीख नहीं रहा हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ है, लाइफ सीधी चल रही है, राइट? सो हंगर, स्ट्रेस, अनसर्टनिटी, इट इज अ फेज अगेन. Right. इफ यू इमेजिन इफ यू आर 60-70 एंड यही हो रहा है, देन आपने कुछ तो गलत किया है, राइट? बट आप 20 या 30 साल के बीच में हो एंड यू आर फेसिंग दिस, यू हैव टू एंजॉय दैट प्रोसेस. Right. Very right. Hunger to do more is very important, but for every hunger there you have to map the cost associated with that. Like, it should not be where you are hungry to build your outside network at the cost of your family and friends. No, that hunger don't have meaning, right? You have hunger to build your own business with short-sightedness, just to put the social tag. And to be very frank, when I was reading something, इंडिया में ना ये सोशल लाइक हर एक कोने में रहता है, दादा एक पर्टिकुलर भाव का जन्मदिन, वो दिखते हैं ना. इट इज इन आवर कल्चर ऑफ स्टेटस. स्टेटस को ना पैसे से ज्यादा वैल्यू है, एंड जिसको स्टेटस चाहिए वो इजीली मैनिपुलेट होता है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म गेम, राइट? सो या हंगर टू डू बिजनेस विदाउट क्लियर पाथ, again at the cost of something, probably your education, again that is not good idea. So hunger is good if you know what are you hungry about, और आपका वो किधर रोकना भी है, राइट? ज्यादा आपने हंगर, भूख लगे, ज्यादा भी खा गया तो आपको भी इंडाइजेशन हो ही जाता है, राइट? इट इज ऑल अबाउट यू शुड नो what are your the breaking points as well. So yeah, for an other way, if someone is not hungry, I'm not saying that he's not, he probably is enjoying. Ultimately वो खुशी आपकी किस में है? If आपका happiness, uncertainty, stress, being hungry, aggressive, action oriented में है, right? And ये सब आप क्यों कर रहे हो? If external validation is required, एक तो आप अपेक्षा कर रहे हो कि दूसरा मैं जब काम कर रहा हो और वो मुझे अप्रिशिएट करेगा, तो उसी दिन तो आप करो ही मत. It should be self fulfilling, right? Yes. If other guy who is not hungry, उसके expectation match हो रही but खुश है, it's okay, right? There is a very interesting book I read 6 months back, the desire to be the desire, no, the courage to be disliked, right? There is a beautiful interaction between the monk and youth, is all about this, right? Beautiful book, I have copy at my home, but it's all how youth and young and अपने बहुत है ऐसे जो thought process रहते हैं, being hungry, खा है, external validation. क्यों चाहिए external validation? If someone is I'm expecting external validation, probably में इधर होता ही नहीं था. आप खुद वैलिडेट कर रहे हो, आप खुद एंजॉय कर रहे हो प्रोसेस, आपके बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है, इट्स ओके, गुड गोइंग. That is definitely the right direction. Ajinkya Ji, you represented PadCare at COP28, being one of the top of the 30 innovators by UNICEF. What was your experience in the blue zone, green zone? What was the key learnings that you brought about? What was your experience there? So the COP28, actually the funny story, I got married on 26 November 2023, and I have to just catch a flight on 27th morning. और मैंने बीवी को तो बताया नहीं था, मैं उनको भी टैग अलोंग नहीं किया था. जस्ट लेफ्ट, हाँ भाई हो गई शादी, अभी मुझे निकलना है कॉप. सो वन ऑफ द फनी स्टोरी आई विल रिमेंबर ऑलवेज इन कॉप, कि शादी के बाद बीवी को छोड़ दिया एंड आई वेंट टू द कॉप. बट व्हाई? बिकॉज अगेन दैट्स समथिंग आई डोंट नो, आई सेट दैट प्रायोरिटी, यार मुझे वो एक्सपीरियंस करना है. So in the COP, I have been the couple of phases. One is a UNICEF thing. Then there was a sustainability different events, and green zone, blue zone, where there are two different mentality mindset. एक जो zone रहता है वो private रहता है, जहाँ पे private in the sense where private companies and all they come talk. एक रहता है very policy driven, NGO driven, where UNICEF was there. Overall, my observation is good for the discussions, but it is very important how this discussion is we are getting materialized into the actions. And the say that COP is good, मेला है, सब लोग आते हैं, discuss करते हैं, but what next, right? What things are getting implemented on ground? What are the actions we have taken? There will be number of commitments, there will be number of pledges that everyone will take, right? But for the startups that time in Dubai, first time they're involved, amazing, crazy environment.
the way the world is moving, with a sustainability, with a carbon conservation, with the mindset change, is good. It's good. Uh, but ultimately, in this world, the capitalistic mechanism is gonna work. Like, look at the Trump's recent decisions to take a step back on all the commitment pledge around the sustainability aspect. Uh, so what I'm like, one thing came out in the COP20. It is a network that what we have built, and definitely the good amount of that credibility. Yeah. All right. Uh, Especially at PadCares, you follow the three Ps. How do you plan on implementing it with the corporate giants or with the people who you collaborate with the companies that you collaborate with, Fortune 500 companies, Meta, and everyone? How do you align these vision together? So when three P's, that's what we talk about, which is I think passion, persistence, and perseverance, right? Right, Yeah. these three. When we look at all these three, like this three is just basic nature of any kind of founder, where you have to be passionate about when you're cracking a deal. When we work right now, we are working with the 600 corporate giants, 1,600 plus sites, with just small team of 120 is amazing, right? Small, I think in sales and marketing, a team must be 6-7 people are bringing this huge amount of the funnel, right? uh, when we interact with the client, is all about concept selling. Don't sell, actually. It should feel like we are solving their problem. Become a partner to solve their problem. And that is a journey. B2B is not just that Blinkit will go and purchase. Right. It is a very thoughtful decision is taking someone to protect, align with the government regulatories, providing the employee comfort or increase the efficiency of the mechanism. So it is a journey, it is a relation. B2B is all about relation. I think until date, when what sales I have done personally, it has never been transactional. I build the relations. I can call them right now, say hi, bye. I can invite them over coffee, right? So it is relations driven business. And वो relation जब बनता है ना, it one way नहीं रहता. It is a two way. You should be passionate about the discussions that among you or that uh, guy is happening. You should be persistent enough to 10 बार ना बोला तो 11 बार भी अपना लाज लज्जा शर्म छोड़ के सर कब मिलना है, right? You have to be there. Then this is very important. And the good part, right? Everyone is observes. मुझे भी ना आप one thing I like about you, you ping me on LinkedIn और Instagram Right. couple of times. ये तो मेरे लिए 3-4 चीजों जगह से आया. Then the entire team is crazy enough to take a good amount of follow up, right? Thank you so And much. these Thank are the you. things indirectly, directly everyone observes. Are you persistent enough? आपको desire है क्या, right? So we have a run matter right now on board. नितिन कामत सबको पता है. Right. नितिन को मैंने एक कोल्ड ईमेल लिखा था, मैं भूल गया था. उसके बाद कभी आए थे, मे बी फिर से उसका रिप्लाई ऐसे नहीं सोचा नितिन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं नॉर्मल फॉलोअप ले रहा हूँ. Yes, I did a follow-up and they are investor right now, right? Then Biocon, the Kiran Shaw, Bruzundar Shaw, again, cold email, couple of follow-ups, done, right? And people observe, good people are observing how you're crazy enough to go beyond your limits, right? Right. And everyone observe karte. So yeah, these are the I think being persistent is one of the values which you can hold right now, which is yeah. one of the most important values which you can hold Yeah. right now. जैसे आपने बोला, अजिंक्य जी, टू बी ऑनेस्ट, इतना बड़ा मेरा विजन ही नहीं था कि हम 17 फाउंडर्स, पीपल फ्रॉम शार्क टैंक, पीपल हु हैव हैड ग्रेटर पब्लिक अपीयरेंसेस, उनको लेके. बट वंस आई स्टार्टेड विथ इट, द फर्स्ट फाउंडर आई हैड वाज बैम्बू इंडिया, योगेश शिंदे जी. And then I was like, there's no looking back after it. I worked 15 days, day and night. I could comment on every LinkedIn post I saw of every founder. I felt like, okay, this is someone I want on the podcast. In fact, with you, I would comment on your post. Yeah, I It's like, noticed that. sir is not replying, sir is not replying. And then I DM'd the PadCare page as well. So this is something, I think this is one value that every youth should uphold at this moment. True, true. जिद्दी होना चाहिए इंसान को is the 100%. persistence is most important. One thing like जिद्दी definitely होना चाहिए, but you have to be humble enough to accommodate, right? Right. जिद्दीपन important है, but if you are not बहुत listening and you are correcting, like आप देखो 1 से 2 बजे का टाइम दिया, उसके बाद मैंने बहुत सारे पुश किए, उसके बाद आज आप
नहीं हमें करना है तो आप अभी रुके, 1:30 बजे अपना जो शुरू हुआ, देन वी आर हैविंग डिस्कशन. सो द मोल्ड, यू हैव टू मोल्ड एज वेल, राइट? तो वो भी बहुत है, जिद्दीपना भी इम्पोर्टेंट है, बट वो एक इम्पोर्टेंस है कि लास्ट पॉइंट पे कुछ चीजें फटी तो हम एडजस्ट कर लेते हैं. Right. Humility is very important इम्पोर्टेंट. is one thing. Our founder also says this. उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी खुद से कि आप शायद काम करके ये सब करके आप एक जगह पे तो पहुंच जाओगे, पर वो आपको जगह को जब संभालना है तब आपको आसपास के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, आप कैसे बातें करते हो उस पर ध्यान देना पड़ेगा. आई एम आल्सो लर्निंग व्हेन टीम रीच टू द 120 ना. मैं पहले कभी वो फाउंडर वाला रखा ही नहीं, बट और सब सब ऐसा बिंदास, अजिंक्य अजिंक्य एक दोस्त है. द थिंग्स आर, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगती है, थिंग्स चेंज हो जाते हैं. आपको बहुत कॉन्शियस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, आपको अनबायस होना पड़ता है, राइट? यू आर ह्यूमन, इमोशंस, इमोशनली ड्रिवन. बट आप इमोशनली ड्रिवन किया तो बिजनेस कैसे करोगे, जस्टिस कैसे दोगे, टफ कॉल कैसे लोगे? सो बट टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों को पता ही नहीं रहता हर एक सीईओ के पीछे एक इंसान है जो प्रोबेबली कभी कभी उस डिसीजन भी लेता है, उसके पीछे वो उस डिसीजन के बारे में इंटरनली एज ए इंडिविजुअल रिग्रेट, गिल्ट रहता है. बट अगेन आई कैन नॉट बिकम दैट कैन इमोशनली ड्रिवन run the business. Right. Let's talk about Shark Tank now. You went there, you won the hearts of 5 of the sharks and entire India at once. You got offer from 4 sharks usi samay, and Piyush was ready to give you a blank check as well. What was the behind the scenes? आपको खुद को क्या फील हो रहा था उस समय? Because you were not showing expressions there. You had things running up in your mind. जब आप प्रोसेस कर रहे थे कि अच्छा वी हैव ऑफर्स फ्रॉम दिस शार्क, वी हैव ऑफर्स फ्रॉम दिस शार्क, व्हाट वाज द थिंग्स व्हिच आर रनिंग इन योर माइंड? ना तभी मुझे बहुत प्यास लगी थी. एक तो मैं एक एक्चुअल रियलिटी बोल रहा हूँ ये, और एक था मेरे केस, बाल है ना मेरा मेसी रहते, वो चंपू करके रखा था मॉर्निंग से. तो एंट्री के पहले आप देखो ना, आपकी छवि बनी रहती है, उसको ही आपको ही तो ये करता है. एंड यू आर स्टैंडिंग, आई वाज स्टैंडिंग देयर सिंस लाइन अप सिंस द मॉर्निंग 7 o'clock, और मेरा शूट हुआ रात के 7 साढ़े 7 बजे. तो 12 घंटे का वो पीरियड, कब आएगा, कौन होगा, खाना, ये प्रेशर रहता है, एंड देन स्क्रिप्ट रहती है. बट एक जो चीज पता रहती है कि जब एनीवन, राइट, नो वन विल टॉक अबाउट पैडकेयर एंड व्हाट आई एम डूइंग इन एंड आउट, वो मुझे ही पता है. वो एक कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है. तो वो जब गया 3 मिनट के बाद की मैं, एंड देन क्वेश्चन स्टार्टेड, तो मुझे पता है मेरे धंधे का मुझे ही इन आउट पता है. उनको मतलब मैं जो भी बोलूंगा, आई हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, right? As coming from engineering background, I have good with numbers. As a technical, I know what about technologies. और जो नहीं पता है, सच बोलो ना कि नहीं पता है, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है, वी आर वर्किंग आउट, और acknowledge that, right? Respect that. So जब questions पूछे, जब blank check आया, to be very frank, मुझे याद ही नहीं आ रहा है. वो आए, 3 मिनट हुए, 25 मिनट का डिस्कशंस हुए, कुछ चीजें हुई, डिस्कस की. आई वॉज हैप्पी विद द व्हाट आई, मैं एंजॉय किया वो प्रोसेस. और वो बहुत बड़ा है, उधर गिल्ट नहीं था, उधर कुछ झूठ नहीं था. जो है वो कॉपी पेस्ट था, जो भी कॉपी पेस्ट इन द सेंस वही मैंने कम्युनिकेट किया था. आई एंजॉय द प्रोसेस, एंड आई थिंक अगेन दैट एवरीवन लाइक प्रोबेबली. It is not about product. Couple of times the journey when I started is all about who that individual. Generally the founders culture is get replicate into the any kind of organization, right? So yeah, Shark Tank I really enjoyed तो है, results भी है. but जब मैं एंटर कर रहा था ना, मुझे वो तभी फीलिंग था लोगों को ये बिकॉज B2C ब्रांड्स बहुत सारी वही चल रहा था, खाना, कपड़ा, और क्या था, और कुछ और ऐसे D2C प्रोडक्ट्स, राइट? लिटिल बिट डिफरेंट. आई एम गोइंग देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सैनिटरी पैड रिसाइकलिंग करना है. लोगों को प्रॉब्लम तो समझ में आएगी कि नहीं, धंधा बनेगा कि नहीं. बट ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है, नहीं समझा, मैं क्या करूं, मैंने तो अभी पाथ चूज किया है. व्हाट इज देयर, व्हाट आई हैव टू बी वेरी अपफ्रंट, राइट? तो या दैट इज समथिंग, द क्रिज, द डिस्कशंस एंड ऑल दैट हैपेंड. एंड बिहाइंड द सीन्स टीम ने बहुत काम किया था. जब शार्क टैंक का एपिसोड आया तो इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स हमारी वेबसाइट ब्रेक हुए. तो वो मेरी मार्केटिंग में तभी दूसरी ये थी, तो कांची, सो शी स्टार्टेड क्राइंग, राइट? इमोशंस अगेन, इमेजिन किसके लिए आप काम करते हो, और वो चीज तो वो अकेलापन नहीं था.
But yes, मजा आया, and then still people remember PadCare because no one has in last 4 season or 5 season किसी को blank check नहीं मिला हुआ है. PadCare is only company of job. और blank check जब आया ना, there are two minds, right? भाई ले लो, पब्लिसिटी कर लो और गो ऐड कर लो ना, राइट? इट इज वन. एंड एक है लाइक हम्बल, क्यों लिया तो पैडकेयर विल बी कैपिटलिस्टिक, राइट? समझो वो डिसीजन मुझे लेना है, राइट? एंड यूटिलाइज दैट एज अ मार्केटिंग फनल रादर देन नेगेटिव. तो यू हैव टू बी वेरी, वो चीज वो टाइम वो सेकंड में आपको पटापट प्रोसेस करके क्या सही गलत करके आपको बोलना है, राइट? तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हाट वर्कड वेल फॉर द पैडकेयर, राइट? इफ मैंने वो ब्लैंक चेक लिया रहता, देयर विल बी टू माइंड्स हमेशा, एक सच सही बोले कि अरे पैडकेयर को धंधा करना है, प्रॉफिट देखना है, दैट्स वेयर दे, देन दैट्स समथिंग आई डिडंट वांट टू डू दैट, राइट? तो या दैट समथिंग इज क्रेजी, लाइक एंड आई स्टिल हैव गुड इन टच विद नमिता, पीयूष, they're good guys, good guys. That is nice. How has your personal life been after Shark Tank? There's a certain personal brand building as well. What do you Yeah. think has changed? I was always on the low key. Like when you talk about, मुझे ऐसे था कि यार काम काम बात करेगा, मैं क्यों फाउंडर ने क्यों बात करना चाहिए. और शार्क टैंक इज मोर अबाउट फाउंडर सेंट्रिक. Right. जब वो हुआ, देन एयरपोर्ट्स पे लोग अरे यार पैडकेयर, ओ तू तू वो है ना, ब्लैंक चेक मिला है, कोई रैंडम ये वो, एवरीवन रिमेंबर दैट पैडकेयर इज अ नेम. आई वाज हैप्पी, ऐसे नहीं मैं खुश हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है. पीपल रिमेंबर यू, your customer support, your, then they will start you this our work should talk about brand, right? What is a brand? Brand is all about the quality of product or the services. Right. So my responsibility has become what I mention on the show. We have to get it delivered in very humble way. Then as a personal way, yes, it has improved, it helped me. It acted as one of the, there are few catalytic change, और जो कैटलिस्ट एक्ट किया एक एंटायर जर्नी में. एक था एक्चुअली दो थे, एक शार्क टैंक का था, और उसके बाद जब हमने पहले फैक्ट्री, और देयर आर नेगेटिव साइड है, बट उसमें मुझे टीम का क्षमता समझ में आई. जब व्हेन वी स्टार्टेड आवर ओन फर्स्ट फैक्ट्री एंड विद इन अ 7 days इट वाज बर्निंग विद अ स्मॉल मिस्टेक, राइट? एंटायर आप देखो ना कि 5-4 साल जो करते हो उसके लिए मेहनत करते हो, पैसा लगाते हो, 7 दिन में एक काम करते वक्त, बिकॉज हमारा एक्सट्रैक्टेड मटेरियल पेपर है, एक क्या बोलते हो वेल्डिंग का जो स्पार्क है वो पेपर पे गिर गया, एंड देन स्टार्टेड फायरिंग. वी डिडंट हैव इंश्योरेंस एज वेल अगेन, तो 1-2 हजार रुपए का कॉस्ट बचाना, अगेन वी हैव टू बी कॉस्ट सेंसिटिव एज वेल, राइट? बट देन दैट माइंडसेट गॉट चेंज, दैट एंटायर फैक्ट्री वी हैव रीबिल्ड अगेन विद इन 7 days. देन माय कॉन्फिडेंस ऑन माय टीम, भाई मैं अकेला नहीं हूं अभी, राइट? तो वो कुछ कुछ चीजें आपके इसमें चेंज हो जाती है, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाता है. दैट आर सर्टेन थिंग्स, एंड शार्क टैंक इज वन ऑफ द वन. These challenges are something which actually test your team and your ability to make quick decision making to overcome these challenges. आपको क्या लगता है कितनी importance hold करती हैं ये चीजें in order to know that okay, I'm building right, I'm doing whatever I'm doing is in the right direction, or maybe I have this ability to bounce back after a fallback? So I will answer the second question first. Bounce back, definitely, because अभी ना डर नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, कुछ भी हो गया तो मैं मैनेज कर लूंगा, बिकॉज आई स्टार्टेड विद नथिंग, राइट? I started with that certain courage, and we have reached at this level. If something has happened, I have that courage to manage the things. तो डेफिनेटली बाउंस बैक ये है. बट मैंने ना कभी प्रेशर नहीं लिया कि राइट थिंग ही करना है, इसलिए मेरे पास वो प्रेशर नहीं था कि राइट, हाँ मैं एक्सप्लोर करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा. बिकॉज स्कूल में, कॉलेज में, 11-12 में, पूरे कॉलेजेस में एजम्पशन से शुरुआत हुई मैथमेटिक्स की. एज्यूम कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो और आगे कर लो. सो माय एक्सपेरिमेंटेशन, आई ऑलवेज लव्ड एक्सपेरिमेंटेशन. सक्सेस एंड फेलियर इज आउटकम ऑफ दैट, राइट? तो डेफिनेटली इट इज कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटेशन इज आर इम्पोर्टेंट. बट आप जब सोचते हो कि मुझे राइट ही होना है, मुझे परफेक्ट ही होना है, आप लिमिट करते हो, आप खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो. तो आपकी एक्सपेरिमेंटेशन, आप ओवर एनालाइज करते हो, और ओवर एनालिसिस और पैरालिसिस क्रिएट करता है एंटायर प्रोसेस में, राइट? तो द थिंग इज, in any certain phase you have to be freedom, there should be freedom to operate, भाई तो है, मैं करेगा. सक्सेस, फेल्यूर इज आउटकम,
You have to adopt. If the failure, it will be learning. So the bounce back, journey gives you confidence to the bounce back. Doing the right thing. Perfection is important. I'm not saying no. Right? There is a 80-20 rule as well. Right? When you reach at certain level, remaining 20% perfect करने के तुम्हारे 80% cost, time, resources, there is no meaning. If 80% of the perfection is delivering the potential outcome. Right? So yeah, these are my few things. If you were not building PadCare, what would be the one thing that you were building? So I must be running another business in probably EV or agricultural domain only, because I was developed, like I was when PadCare started. ना किसी को पता नहीं है. There was another story, another startup that I was back end में running. It's called Raho. Right. Okay. So that was something, multiple product. I built the drones. I built that EVs as well, जो यूलो चलती है. I built a cold storage system. Again, I was exploring because मजा आता था. मुझे अभी भी कभी कभी वीकेंड में ऐसा आता नहीं है, दुनिया में फीलिंग होता है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो. अभी भी आता है मुझे, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे हो जाता है. आई वाज डू रैंडम थिंग्स, प्रॉब्लम्स क्या है, बिकॉज वो मजा है, वो मेरी हॉबी है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना. तो या डेफिनेटली आई वाज, मैं कुछ तो बिल्ड करते रहता था. मैं डेफिनेटली जॉब मटेरियल अपना धंधा. हाँ, कुछ भी. मैं वही बोला, वड़ा पाव की गाड़ी रहती थी, बट खुद का था. A book or movie that changed your life? There are a couple of definitely I am not watched good amount of movies. Books, बहुत सारे books है हर एक stage में. Maybe I will just quickly 0 to 1 in early career. Right. Then and the hard things about hard things again is a part of entrepreneurial journey. Recently, I think I'm rereading that book called Who Moved My Cheese. Right, it's afraid to change, how it is impacting. It's a good book. एक दिन में भी आप ये कर सकते हो. So the books really help me, right, to correct my thought process. और इजी नहीं है बट ये ज्ञान का चीजें रीड करना, टू बी वेरी फ्रैंक, इट टेक्स टाइम. मतलब ऐसे मेरे पास प्रेशर नहीं रहता है. मैं कभी भी कौन सा बुक ओपन कर दूं, मैं कैसे नहीं बोलता आज ये मुझे पूरी बुक खत्म करनी है. नहीं, मैं एंजॉय करूंगा, तब तक पढ़ूंगा, उसके बाद ठीक है मैं पॉज करूंगा, आई विल रीड डिफरेंट बुक. बट व्हेन the thing is you have to be start learning and implementing certain things, right? So yeah, there are a couple of books that really course corrected my thought process, and it created a indirect impact on the PadCare journey as well. That is amazing. One word you would describe yourself with? Maybe crazy enough to do something that never, I think it is a line, but crazy is a word. Because people when started, government वाले सब बोलते हैं अजिंक्य क्या कर रहा है, जा बाहर जाके क्या बोलते हैं, सीख ले, you will get decent job, या कचरे में क्यों काम कर रहा है, right? So yeah, I'm crazy right now as well. ठीक है, मन में आया मैं ट्राई करके देखूंगा. मैं टीम को भी बोलता हूँ ट्राई करके देखो, right? You have to crazy enough. If you want to change the world, you have to crazy enough. You have to be outlier. Right. That is amazing. अगर आपके ऊपर एक मूवी बनती तो उसका नाम क्या होता? पैडमैन इज आउट ऑफ क्वेश्चन. अभी मूवी, आई थिंक, आई डोंट नो, अभी मैं ऐसा एक मूवी का नाम नहीं बना ली. यू कैन सजेस्ट यार, तूने also किया, बट आई थिंक मुझे मूवी जो पसंद है, ZNMD, दैट इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट? देयर इज वन चांस, वन ड्रीम, जस्ट एग्जीक्यूट, डू, वर्क फॉर योर हैप्पीनेस. ZNMD, मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अजिंक्य जी, आप कहते हो आपको आंसर नहीं पता है, फिर आप ऐसा आंसर दे देते हो कि मैं सरप्राइज हो जाती हूँ. तो अजिंक्य जी, एक चीज जो ऐसा है जो लोग स्टार्टअप फाउंडर्स और स्टार्टअप्स के बारे में अज्यूम करते हैं, बट यू थिंक इट इज रियली रॉन्ग. स्टार्टअप्स फाउंडर्स आर मिलीनियर्स, ऐसा assumption हुआ रहता है, बट उनके इसमें कुछ भी कौड़े नहीं रहते हैं, and they are under salaried compared to the market at certain level, because you are taking a bet on the future. Right. What's one taboo beside pads that Indians should address more? I feel the which is related to the posh, right? There is something India may still, there is a mentality, conservative mindset, how the people are looking at women, right?
when I just morning I was traveling, coming back from Chinchwad area to office. Hmm. I was looking at there was a junction, a corporate woman was traveling, and everything is male. मैं surprised हुआ, मुझे ही गंदा feel हुआ, right? That mentality of community to how to look at women, right? And वो change बदलाव, it will take a time, right? But important part, like वो एक थे मेरे वो पॉश के साइड में, how we can bring that change, how we can bring that mindset, how we can accept this change, right? Look out, it is happening in like city like Pune. What about in the villages, right? So that openness is very important, and the bringing that knowledge, uh, yeah, and human values definitely, like still India में like human value बहुत कम है, तो वो एक चीज रहेंगे. Talking about taboos as well, your company is one such जहाँ पे मे बी अगर आप किसी को बता रहे हो उस बारे में तो कहीं कोई awkwardness, resistance आए. Have you come across these awkwardness and resistance situations? बहुत सारे, मतलब ऐसे अभी भी कभी कभी मैं एक सर्टेन एज ग्रुप में बात करूंगा, मैं सैनिटरी पैड रिसाइकल करता हूँ, बात ही नहीं, सैनिटरी नैपकिन का नाम भी मेरे सामने नहीं लेते, राइट? बिकॉज वो सब चीजें है, बट इट्स देन मैं नहीं तो कौन, हु विल ब्रिंग दैट चेंज, राइट? तो बोला कि ठीक है, एज्यूम करेंगे लड़का क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है, एक लड़का होके इसमें काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली इफ ये जो क्वेश्चंस और डाउट्स आते हैं ना, इट इज अ food for me to rethink how what I can do different, right? And it's just not in India. When I went to the China as well, I have provided this recycled paper to someone. उसने तो पेपर ही डाल दिया, right? ठीक है, okay, it's not your fault, it's our fault. I taken on me. I am not before handing over it to, मैंने आपके communication से इतना trust built up नहीं किया. Right. I cannot control the other thought process. I can just control my way of communication to build the trust. Very right. Also, what is the one go-to mantra that you have, or one thing that every youth should know? I think we have to we should, there are a couple of them where I enjoy, like you have to accept challenges, uncertainty in positive way, right? You have to deal with that, you have to enjoy with that. Stress is also good because stress generally push, give little bit push, but for right things. मतलब ब्रेकअप होने के बाद स्ट्रेस हो, दैट इज डिफरेंट, राइट? बट अदर थिंग इज स्ट्रेस अराउंड, ये मैं चीज नहीं कर पा रहा, इट इज गुड स्ट्रेस. माय गो टू मंत्रा इज जस्ट, there are debates around hard work and smart work, right? एक सर्टन IQ लेवल, एक लेवल पे लेके जाता है स्मार्ट वर्क, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसे, अगेन माय पर्सनल बायसेस, हार्ड वर्क beats smart work over a longer period of time, right? Again, that is my personal perspective. So be hard work, like, hard work करो, like रुको मत, questions पूछो, curious रहो, right? That's all. I think we've had major takeaways from this session by now. Okay. Thank you so much for being the guest at Youth Ki Baat, Ajinkya Ji. It was absolutely an honor, and I'm very sure that our network of 230 plus schools and our network of the dreamers and doers would be more than happy to watch your story come live. Thank you so much. Thank once you. again. You have done the good job. You have asked good basic questions, right? And I also enjoyed this discussion. I never failed like this a question and answer. I enjoyed that. Thank you. Thank you so much, Ajinkya. Thank you for your team. Thank you.